Hello everyone, मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. TOC is all about language and corresponding converter. आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक में एंट्री करने वाले हैं, that is complexity theory. And under this, we are going to touch to the two domains. One is time complexity, जो कि आप data structure subject में पढ़ चुके हैं. And we will be heading towards with the help of time complexity हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक में एंट्री करेंगे, that is tractable as well as intractable problems. So let's begin with some of the basic discussion about what the time complexity is and what are the issues in algorithmics that we need to take care of. So as this is a very special and versatile branch of computing, that is algorithmics, it says that it's a systematic study and it's all about study of fundamental techniques used to design and analyze efficient algorithm. अभी किस algorithm को हम लोग efficient algorithm कहेंगे? That is based on certain criteria. For example, अगर आप sorting के ही methodologies लो, तो you have n number of sorting algorithms like bubble sort है, merge sort है, quick sort, selection sort, insertion sort, n number of sorting algorithm. So on the basis of what, as a designer, as a user, as a programmer, I must go with particular sorting algorithm. So generally we have seen in data structures that it is based on certain criteria. That is, one is space complexity, other one is time complexity, and the quality of algorithm, right? So more genuinely, we are looking towards, or we are more genuinely interested into the time complexity of an algorithms, right? So इस discussion में हम लोग थोड़ा सा detail में जानेंगे कि क्या क्या time complexity issues है. There are various notations that you might have studied in data structure to represent the time complexity. That is big O notation, theta notation, omega notation, and n number of issues. But right, but यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि in what way we can go on computing certain time complexity issues against an algorithms, right? Okay, so generally if you are able to see the function, that means the program that is written is a linear in nature, मतलब उसमें लूप्स नहीं है, लाइन बाय लाइन, मतलब printf scanf printf scanf printf scanf ऐसा कुछ कोड लिख रहे हैं, right? Okay, so in that case, if it does not have any kind of loops in it, any kind of recursion in it, then its efficiency is totally depends on number of instructions it contains, right? Okay, and then definitely that execution point depends on the speed of microprocessor. But generally when we are talking about time complexity, we are not taking into account the speed of computer, the speed of microprocessor, but we are talking about in what way this algorithm is designed so that, and इसके instructions कैसे लिखे गए हैं, इसके iterations कितने होने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग time complexity को decide करते हैं, right? So अगर अपना function linear है, so it totally depends on number of instructions that it contains, right? So generally when we are looking towards more efficient calculations, then we are just concentrating on loops as well as recursions, right? So mainly the efficiency of an algorithm, we are going to focus on what? Loops, right? Okay, so we can say that generally focusing and concentrating on the loops or the recursion, because recursion can be down the line, can be treated as what? Loops only. So we can always go with processing how many times of, or how many number of times that particular element can be processed, and फिर हम लोग उस हिसाब से उस algorithm का efficiency find out करेंगे, right? Let us go with a very simple looping structure, and इस loop के साथ चलते हैं, right? I is equal to 0, less than 1000, I plus plus, right? Definitely anybody can say that how many times this loop is going to iterate, and we can say like this is going to iterate for 1000 times, right? Okay, now ऐसे जो loops है वो उसका वैल्यू 0 से लेके 1000 तक प्लस प्लस से बढ़ रहा है, या यू कैन हैव दिस 1000 से लेके 0 तक माइनस माइनस से घट रहा है. सो इन दैट केस
its growth is linear, right? And definitely the efficiency of this totally depends on number of times the loop ka code is going to get executed. So I can say like it is going to get executed 1000 times. So we can say that it totally depends on or directly proportional to the number of iterations that this particular loop is going to have. So we can always put this function as f of n is equal to what? N. And हम लोग इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कह सकते हैं n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग लूप देते हैं जिसको जनरली हम लोग लॉगरिथमिक लूप्स कहते हैं, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व दिस लूप्स. यहाँ पे i का वैल्यू इज 1 लेस देन 1000, i का वैल्यू अभी प्लस प्लस नहीं हो रहा है बट इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे 1000 से लेके 1 तक जाना है बट i का वैल्यू माइनस माइनस नहीं हो रहा है बट इट इज डिवाइडेड बाय 2. कितने इटरेशंस हो सकते हैं इसमें? डेफिनेटली i का वैल्यू 1, फिर होगा 2, फिर होगा 4, 8, 16, 32, 64, 128, देन बनेगा 256, 512, 1024 होने के बाद ये लूप ब्रेक होने वाला है, right? So as it goes into multiplying it as well as dividing it, we can say such kind of loop जहां पे you will be able to find multiplication as well as division operations as iterative entities, then you can say that those loops are working as a logarithmic loops, right? Okay, so definitely itne sare iterations to humko chahiye, right? Okay, so 10 number of iterations will be carried out in both the situations that we discussed, and in such case we can say that is loop ka complexity or functionality can be given as log of n, right? Okay, now अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब the number of iterations is based on multiplication and division operation, then we experience generally the complexity in terms of log of n. अगर वो linear growth है तो we are considering the complexity as n, right? So you might have seen that binary search अगर algorithm आप देखो तो आप array को equally half में divide करते जा रहे हो and it goes with the complexity of log n, right? Okay, उस हिसाब से now when we talked about nested loops क्या है? loops के अंदर loops, any loop can be nested inside any other loop, right? but इसका working जब हम लोग देखते हैं तो we can just focus on to outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iteration. outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iterations, right? So in that case, how we can look towards this nested looping conditions? So let's take an example. अगर यहाँ पे आप ये दो for loop देख रहे हो, so outer for loop is growing in a linear way, right? But inner for loop जो है, that is working with the logarithmic approach. So इसका हम लोग अगर functionality लिखने जाएंगे तो we could be able to see the efficiency of this algorithm in terms of n, that is outer linear चल रहा है and inner loop जो है वो log n के साथ चल रहा है. So this can be treated as n log n, right? Okay, so I hope कि this is clear. So this becomes what? n log n, right? अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं quadratic loops, मतलब क्या है? I का value is also growing in a linear way. Outer loop grows in a linear way. Inner loop also grows in a linear way. And we know that this is outer loop will work for n times. Inner loop is also going to work for n times. So the total time complexity is n square, right? So function can be written as its efficiency factor of n square, right? ऐसे ही for loop के अंदर और एक for loop. So I can say that this is cubic time complexity. Next to that, one for loop linearly growing. इसके अंदर nested another for loop with linear approach, another for loop with linear approach, one more for loop with linear approach, 4. So this is n raised to 4, right? Okay. So ऐसे ये complexity होगा. So this is quadratic, then we can have cubic, then we can have n raised to 4, then n raised to 5. So n raised to 4, 5, 6 उसको कहेंगे polynomial time complexity, right? Okay. So generally जब हम लोग ये complexity देखते हैं, so we generally head towards सबसे कम समय में execute होता है what? Log n. Then we have order of n. Then we have order of n log n.
then we have quadratic, then cubic, then polynomial, like that, right? Okay. So जब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में करते हैं काम, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूम में वो देना चाहता हूँ, राइट? सो वी कुड ऑलवेज हैव ऑर्डर ऑफ वन that is constant is always less than order of what n, right? Is always less than, or I can say that यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके पहले और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ log n, right? And then we can have order of n followed by we can have order of n log n, and then we can have order of n square, then order of n cube, then we can say order of n raised to k, right? Okay. And इसके बाद बढ़िया एंटिटी आता है, and that goes with, right, I can say like order of 2 raised to n, and then we can have इसके बाद आएगा order of n factorial, right? Okay. नाउ जब भी हम लोग इस डोमेन को टच करते हैं, सो आई कैन ऑलवेज सेज दैट दिस इज अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज, दिस इज लॉगरिथमिक, then we have this as linear, then this becomes linear logarithmic, right? Next to that we have this as quadratic, then we have cubic, and then ये सबसे इंटरेस्टिंग, that is what polynomial टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? ओके. पर अभी ये जो दोनों एंटिटी आगे भी इसका बात करेंगे, दिस बिकम्स व्हाट 2 raised to n, मतलब इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल, and then this becomes what factorial, right? Okay. and आगे कुछ टेबल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि how this is going to affect on the nature of efficiency of an algorithm, and can they be computed, right, with the help of normal computing powers, right? But this is like constant, logarithmic, linear logarithmic, quadratic, cubic, polynomial, exponential, as well as factorial time complexity issues, right? Okay. now अगर इसको सेव करते हैं, and when we go ahead into this, now please see the table यहाँ पे मैंने लिखा है, and this table gives you an idea about, right? अगर n का वैल्यू 10,000 है तो हम लोग अगर लॉगरिथमिक के साथ चल रहे हैं, मतलब 14 इटरेशंस में ये काम होगा, तो ये काम माइक्रो सेकंड्स में होगा, राइट? अगर लीनियर है, मतलब ऑर्डर ऑफ n के साथ है, तो n का वैल्यू इज व्हाट 10,000 है, 10,000 इटरेशंस करने पड़ेंगे, तो ये काम कुछ सेकंड्स में होगा, ऐसे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, राइट? लीनियर लॉगरिथमिक ये वैल्यू, दिस विल आल्सो गो ऑन एग्जीक्यूटिंग विद नॉर्मल कंप्यूटिंग पावर इनटू द सेकंड्स, राइट? ओके. बट क्वाड्रेटिक जब है, सो 10,000 का स्क्वायर इट टेक्स व्हाट मिनट्स, राइट? ओके. बट अगर अपना है 10,000 raised to k, and this goes into what polynomial zone now, right? Okay. अगर वो polynomial zone है तो it may take certain hours और it may take certain days. आगे भी एक टेबल है, वो आपको मतलब देखने के बाद you will surprise to see like wow how this complexity is going to work against, right? Okay. So it will take hours or days, right? So we can write certain algorithms which may take what पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आवर्स में और कुछ डेज में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बट थिंक ऑफ एक्सपोनेंशियल 2 raised to the n,000, right? Okay. how this is like 2 raised to 32, 2 raised to 64. अपन अगर लॉन्ग डेटा टाइप का, अगर हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप का रेंज को डिस्कस करते हैं, सो इट टेक्स 64 बिट्स, दैट इज 8 बाइट्स, तो 2 raised to 64. यहाँ पे बात हो रहा है 2 raised to 10,000, and this goes into the zone of what intractable, मतलब computing cannot go on solving this
टाइप ऑफ अल्गोरिथमिक एस्पेक्ट, एंड फैक्टोरियल तो उसके बियॉन्ड है, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 10,000 का फैक्टोरियल, राइट? Okay, so this is going to be a very huge thing, right? So I can say like यहाँ पे मतलब polynomial time complexity तक के problems we are able to solve through the computing, and generally we call them as tractable problems. and फिर उसके बाद वाले entity, that is exponential time complexity as well as factorial time complexity, generally the problems are known as what? Intractable problems. और एक आगे का टेबल है, यू विल सरप्राइज टू सी दिस वन, राइट? ओके, वेरी जेन्युइन एंटिटी, इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखो अभी n का वैल्यू 10, 20, 50, 100, 300 ऐसे बढ़ रहा है, राइट? अगर क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स में होगा, सेकंड्स में, राइट? ओके, बट अगर आप n⁵ पॉलिनोमियल के साथ काम कर रहे हैं, सो 10 इटरेशंस के लिए इट विल टेक सेकंड्स, 20 के लिए इट विल टेक जनरली 3 पॉइंट, मतलब सेकंड्स में ही काम हो रहा है। 50 के लिए इट विल टेक मिनट्स, बट थिंक ऑफ 100 इट विल टेक्स आवर्स, एंड थिंक ऑफ 300 इट विल टेक डेज, राइट? ओके, यहाँ पे तो फैक्टोरियल वाला टेबल मैंने मतलब दिखाया नहीं है, राइट? बिकॉज यू विल सरप्राइज टू सी ओनली द एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट? 2n देखो, हाँ ठीक है, n का वैल्यू 10 है तो 210 सेकंड्स में होगा, 220 सेकंड्स में होगा, राइट? 2 जब 50 करेंगे तो उस कंप्यूटेशन को चाहिए हमको 35 इयर्स, 100 करेंगे तो 400 ट्रिलियन सेंचुरीज, मतलब this is beyond the capacity of computing, and that's why exponential zone उसके बाद वाला factorial zone goes into the intractable problem zone, right? So track कौन से प्रॉब्लम, कौन सा एल्गोरिदम ट्रैक कर सकते हैं जो अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पॉलिनोमियल का दे रहा है, तो वहां तक तो ठीक है, वहां तक के प्रॉब्लम्स वी कैन इजीली manage, right? Okay, so tractable versus intractable problem, so please read this very carefully, right? An algorithm for a given problem is said to be polynomial time algorithm अगर उसका worst case time complexity belongs to order of n⁻k है, राइट? तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, राइट? ओके, एंड द सेट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व विद इन पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली वी कॉल देम एज ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, उनको ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, राइट? ओके, बट the set of all problems that cannot be solved beyond the capacity of polynomial time complexity, then we can say that those problems are treated as intractable problem, right? And इसी डिस्कशन को हम लोग आगे के सेशन में लेके जाने वाले हैं। पी सेट ऑफ प्रॉब्लम, एनपी सेट क्या है, एनपी कंप्लीटनेस क्या है, एनपी हार्ड क्या है, those are the very genuine and interesting entities that you might have seen them in data structures also. अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनको देखने जाने वाले हैं, राइट? ओके, सो यहाँ तक ये वीडियो यहाँ पे रोकते हैं by looking into such an amazing aspect of polynomial time complexity, exponential and factorial, right? polynomial तक ट्रैक कर पा रहे हैं, so those problems are tractable, उसके beyond all problems becomes intractable problem. That's it for this session. I hope you must have amazed to see some of the issues about exponential time complexity and intractable zone. That's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.